Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to derive the important mirror formula, that is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F for concave and convex mirrors of chapter 9 ray optics and optical instruments for class 12 physics in part 23. First of all, we have to derive mirror formula for a concave mirror. Let a light ray producing from an object AB placed beyond the center of curvature C of a concave mirror M1 M2 of pole P, focal length small f and radius of curvature capital R, travels parallel to the principal axis Px of the concave mirror and falls at point D of the mirror. After reflection, the light ray travels along the path PQ, passing through the focus point capital F of the concave mirror. Another light ray from the object AB passing through the center of curvature C of the concave mirror falls at the another point K of the concave mirror M1 M2 normally and retraces its path along the same line and meets the first reflected ray light ray DQ at point B dash. So a real inverted and diminished image A dash B dash of the object AB is formed between the focus F capital F and center of curvature C of the concave mirror. एक ऑब्जेक्ट AB है जो कॉन्केव मिरर M1 M2 के प्रिंसिपल एक्सिस पर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पहले रखा हुआ है तथा AB से टू लाइट रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर कॉन्केव मिरर के पॉइंट D पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है तथा रिफ्लेक्शन के बाद DQ पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल करती है कॉन्केव मिरर के फोकस F से होकर तथा दूसरा लाइट रे ऑब्जेक्ट AB से प्रोड्यूस होकर उत्पन्न होकर कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए गुजरते हुए कॉन्केव मिरर के पॉइंट K पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है और चूंकि यह नॉर्मल इंसिडेंट का केस है, प्रकाश किरण लंबवत रूप से चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण, इसलिए नॉर्मल इंसिडेंट का यह केस है। के पॉइंट पर कॉन्केव मिरर के लंबवत वह प्रकाश किरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है और इसलिए उसी रास्ते पर प्रकाश किरण परावर्तित होकर वापस लौटती है और लौट करके रिटर्न होकर के बी डैश पॉइंट पर पहली परावर्तित किरण फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे DQ से मिलती है, मीट करती है और इसलिए ऑब्जेक्ट AB का वास्तविक रियल इन्वर्टेड उल्टा तथा ऑब्जेक्ट AB से छोटा डिमिनिश्ड इमेज प्रतिबिंब A डैश B डैश कॉन्केव मिरर का फोकस F तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच बनता है। नाउ PA, डिस्टेंस PA दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट AB फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PA ऑब्जेक्ट वस्तु AB की दूरी है जो कि -u न्यू साइन कन्वेंशन से, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है और यह डायरेक्शन मेजर किया गया है PA इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट, यह इसलिए यह डिस्टेंस निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो PA इक्वल टू -u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PA डैश A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो PA डैश दूरी डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा
और इमेज डिस्टेंस को भी सिंबल से डिनोट किया जाता है, लेकिन यह भी निगेटिव होगा, माइनस भी, इसलिए कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में यह डिस्टेंस भी मेजर किया गया है पी ए डैश। पी एफ कनकेव मिरर का पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, जो कि निगेटिव, यह भी निगेटिव होगा, पी एफ इजकल टू माइनस एफ। एंड पी सी कनकेव मिरर का पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन the pole of the concave mirror and its center of curvature, PC is equal to radius of curvature, it is also minus r, minus capital R. Now two triangles ABC and A dash B dash C are similar, so write down in the similar triangles, ABC and A dash B dash C, A dash B dash C। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से वर्टिकल साइड, बोथ ट्रायंगल्स के वर्टिकल साइड्स का रेशियो उनके हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। सो ट्रायंगल ए बी सी का वर्टिकल साइड ए बी है, ए बी, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी का वर्टिकल साइड ए डैश बी डैश है। सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, अब हॉरिजॉन्टल साइड ए बी सी का सी ए है, तो दैट इज सी ए, और सेकेंड जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, उसका हॉरिजॉन्टल साइड सी ए डैश है, तो दैट इज ए डैश सी। सो वी हैव ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डैश सी, एंड सी ए इज नॉट ए फिक्स्ड, not a defined distance, so CA can be written as PA minus PC. PA and PC are known, so difference between PA minus PC gives CA, and also A dash C can be written as PC minus PA dash. A dash, in place of A dash C we can write PC minus PA dash, and this is equation number 1. Now into another similar triangles DNF and A dash B dash F, where DN is the normal drawn from point D, that is point of incidence on the concave mirror to the principal axis. So in two another similar triangles DNF and A dash B dash F, both are also similar, so we have write down in the similar triangles DNF and A dash B dash F, again the ratio of vertical sides of two triangles will be equal to the horizontal sides of both triangles. Ratio of horizontal sides of two triangles, vertical side of first triangle DNF is DN, and vertical side of the another triangle A dash B dash F is A dash B dash. So we can write DN upon A dash B dash equals to, now horizontal side of DNF is triangle DNF is NF upon, and horizontal side of A dash B dash F is FA dash, so it is NF upon FA dash, or DN is equal to AB, because the incident light BD is parallel to the principal axis PX, so DN will be equal to AB. So in place of DN we can write AB upon A dash B dash equals to NF. Point N is very close to pole of the mirror, concave mirror, so in place of NF we can write PF. So in place of NF it is PF, and FA dash can be written as PA dash minus PF. PA dash minus PF is FA dash. So it is equation number 2. Now comparing both equations 1 and 2, in LHS of both equations, AB upon A dash B dash and AB upon A dash B dash, that is LHS of both equations is same. LHS of both equations is same, that is AB upon A dash B dash. So RHS of both equations will be also equal. So comparing equations 1 and 2, or from equations 1 and 2 we have
राइट हैंड साइड को इक्वल किया जाए दोनों इक्वेशंस का 1 and 2 का, तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज PA माइनस PC अपॉन PC माइनस PA डैश इक्वल्स टू RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज PF अपॉन PA डैश माइनस PF, और we know PA is object distance minus U, so in place of PA we can write minus U minus PC. PC is radius of curvature of the concave mirror which is minus R, so PC is minus R upon PC is in the denominator, first term is PC is minus R minus PA dash is minus V, PA dash is minus V equals to PF in RHS. In the denominator there is PF is minus F upon PA dash is minus V minus PF is minus F. Now we have minus U minus into minus R, that is plus R, so we can write minus U plus R upon minus R minus V, that is plus V, so minus R plus V, so LHS becomes minus U plus R upon minus R plus V equals to, now RHS is minus F upon minus V minus into minus F, that is plus F, so RHS becomes minus F upon minus V plus F. Now after cross multiplication, by cross multiplication we have minus U plus R multiplied by minus V plus F equals to, now in RHS it is minus F multiplied by minus R plus V, or now multiplying these terms, minus U into minus V, that is plus UV, minus U multiplied by the second term inside the bracket which is F, so it is minus U into F, that is minus UF. Now capital R into minus V, it is minus RV, and after multiplying capital R into F, that is RF plus RF, and in RHS it is minus F into minus R, that is plus FR, and second term is minus F plus V, that is minus FV. FR and RF in LHS and RHS both terms are equal, so both will cancel out. Now we have UV minus UF minus R can be written as radius of curvature can be written as 2F, so it is 2F into V प्लस FV. RHS में माइनस FV प्रेजेंट है, तो इसे भी LHS में लाया जाए, इट बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज प्लस FV, and RHS becomes 0. Now RHS becomes 0, or UV minus UF minus 2FV plus FV, that is minus FV equals to 0. This is equation number 3. Now dividing both sides of equation 3 by UVF to get the formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F for the concave mirror. So dividing both sides by UVF, we have UV upon UVF in the first term minus UF upon UVF in the second term minus FV upon UVF. इस टर्म में LHS के इस टर्म में UVF से डिवाइड किया गया और RHS में भी UVF से डिवाइड किया जाएगा, तो 0 अपॉन UVF इज इक्वल टू 0. और फर्स्ट टर्म में LHS में UV न्यूमरेटर में एंड UV डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, बोथ विल कैंसिल आउट. सो फर्स्ट टर्म में
फर्स्ट टर्म में बचा 1/f और सेकेंड टर्म में भी u एंड f न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, u एंड f। तो सेकेंड टर्म में बचा 1/v एंड थर्ड टर्म में f and f in the numerator and denominator and v and in the numerator and also in the denominator will cancel out. So in the third term it is 1/u. So we have 1/v minus 1/u terms को RHS में कर दिया जाए तो we have 1/v plus 1/u, 1/f is equal to 1/v plus 1/u। अब साइड फिर चेंज कर लें, LHS को RHS में, RHS को LHS को RHS में, RHS को LHS में, तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f and this is for equation number 4 and this is the required formula, that is this is the mirror formula, that is 1/v plus 1/u is equal to 1/f for a concave mirror. Now we have derived mirror formula for a convex mirror. In case of a convex mirror, virtual, erect and diminished image A dash B dash of the object AB placed between pole of the convex mirror and infinity is formed between pole and focus of the convex mirror behind the convex mirror or other side of the convex mirror. From the two light rays coming from the object AB, one parallel to the principal axis is reflected along DQ and another light ray falls, another light ray from the object AB falls obliquely on the convex mirror and it is reflected back, and when it is both reflected rays are produced virtually, then they meet at point B dash behind the mirror. So a virtual, erect and diminished image that is smaller than the object A dash B dash is formed between pole and focus of the convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के केस में कॉन्वेक्स मिरर के पीछे दूसरे साइड में, अदर साइड में ऑब्जेक्ट ए बी का वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधा तथा ऑब्जेक्ट ए बी से छोटा दैट इज डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होता है। इस फिगर 2 में भी फॉर्म हुआ है कॉन्वेक्स मिरर M1 M2 का पोल तथा फोकस के बीच में। नाउ इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स दैट इज both triangles ABC and A dash B dash C are similar. Before doing this, we have PA, that is object distance, distance of the object AB from the pole of the convex mirror, that is PA is equal to minus U, because it is measured in the left direction, that is opposite to the direction of incident light, which is left to right. So PA is the object distance, it is minus U. PA dash, A dash B dash the image of the object, virtual image of the object, virtual and erect image. So distance of the image A dash B dash from the pole of the convex mirror, that is PA dash is equal to plus V, that is image distance, and PF, that is distance between pole and focus of the convex mirror. This distance is also positive, that is focal length of the convex mirror. And PC, distance between pole of the convex mirror and its center of curvature, PC, is also measured along the direction of incident light, that is left to right, so it is also positive. So PC is equal to plus R, that is radius of curvature of the convex mirror. Now
in two similar triangles, ABC and A dash B dash C. Two similar triangles ABC and A dash B dash C. We have the ratio of vertical sides of to both triangles, that is AB upon A dash B dash. AB upon A dash B dash equals to the ratio of vertical sides of two triangles will be equal to the ratio of horizontal sides of the two triangles. And horizontal side of both triangles are CA for ABC and A dash C for another triangle A dash B dash C. So it is AC upon horizontal side of ABC is AC upon A dash C, horizontal side of the smaller triangle A dash B dash C, which is formed in the other side of the convex lens. Or AC can be written as PA plus PC, that is PA plus PC. AC is PA plus PC and A dash C is PC minus PA dash. PC minus PA dash. A dash C is PC minus PA dash. This is equation number 1. And in two other similar triangles, that is DNF and A dash B dash F. So in triangles, similar triangles, write down DNF and A dash B dash F. A dash B dash F, we have ratio of their vertical sides, that is DN upon A dash B dash. DN upon A dash B dash is equal to the ratio of their horizontal sides, that is NF is the horizontal side of the triangle, DNF is equal to NF upon, and A dash F is the horizontal side of the another triangle A dash B dash F upon A dash F, or DN is equal to AB, because first light ray BD is parallel to the principal axis XX dash. So DN, vertical distance DN will be equal to the size of the object, that is AB. So in place of DN we can write AB upon A dash B dash equals to NF. NF, point N is close to P, so NF can be written as PF. So it is PF upon A dash F. A dash F is equal to, can be written as PF minus PA dash. Both are known distances, PF and PA dash. So PF minus PA dash. PF minus PA dash is A dash F. A dash F is equal to, that is RHS of equation 2. A dash F is equal to PF minus PA dash is A dash F. And this is equation number 2. Now comparing both equations, or from both equations, both LHS of both sides of equations, both sides of equations 1 and 2 is same, that is AB upon A dash B dash and AB upon A dash B dash. So RHS of both equations, that is 1 and 2, will be equal. So we have from equations 1 and 2, we have RHS of 1 is PA plus PC upon PC minus PA dash equals to PF upon PF minus PA dash. Now we have PA. PA is minus U, object distance is negative, minus U plus PC. PC is plus R, radius of curvature of the convex mirror, which is positive, upon PC. In the denominator, first term is plus R, that is R minus PA dash. PA dash is plus V, that is V. R minus V in the denominator of LHS. And in RHS it is PF. PF is plus F, that is F, upon PF minus PA dash. PF is F minus PA dash is image distance. Distance of the image A dash B dash from the pole of the convex mirror, which is right to the pole along the direction of incident light, along the direction of travel of incident light, that is
PA dash is positive according to new sign convention. So PA dash is V. So RHS is F upon F minus V. This is equation number 3. Now by cross multiplication we have minus U plus capital R multiplied by F minus V. F minus V equals to F, a small f multiplied by R minus V. F multiplied by capital R minus V. Or after multiplying the terms in both brackets in LHS, we have minus U into F minus U, and then minus U multiplied by minus U, that is plus UV, and product of R and F is RF, and in last product of R into minus V is minus RV, and in RHS it is FR, that is RF, F into R, RF minus F into V, FV. RF and RF in both sides, LHS and RHS will cancel out. So we have minus UF in LHS, minus UF plus UV minus RV and plus FV is equal to 0. RHS becomes 0 because minus FB is taken out in LHS. माइनस एफ बी को LHS में लाया गया तो माइनस एफ बी पॉजिटिव हो गया प्लस एफ बी, और RHS में कोई टर्म नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0. और माइनस यू एफ प्लस यू वी एंड आर कैन बी रिटन एज 2f. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस टू द फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, ट्वाइस होता है, तो आर के जगह 2f लिखा जाए इन 2f, सॉरी आर इज इक्वल टू 2f, टर्म है आर भी, तो माइनस आर के जगह 2f, तो माइनस 2f इंटू वी, तो माइनस 2f वी प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0. और माइनस यू एफ प्लस यू वी, and here minus 2fv plus fv is minus fv. Minus fv is equal to 0. This is equation number 4. And to get the mirror formula, dividing both sides by uvf, dividing both sides of equation 4 by uvf, we get, or we have minus uf upon uvf upon plus uv, second term is uv in LHS, upon uvf minus third term is fv upon uvf, and in the first term uf in the numerator and denominator will cancel out, so we will left with minus 1 by v in the first term. In the second term uv in the numerator and denominator will cancel out, we will left with 1 by f. second term में 1 by f बचा, माइनस थर्ड टर्म में एफ भी और एफ भी कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो वी विल लेफ्ट विथ 1 बाई यू इन द थर्ड टर्म बिकॉज एफ वी एंड एफ वी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कैंसिल आउट. सो वी हैव नाउ वी कैन राइट दिस द अबव एज 1 बाई भी माइनस 1 बाई भी फर्स्ट टर्म है, इसे RHS में ले जाया जाए तो 1 बाई भी, एंड थर्ड टर्म भी निगेटिव है माइनस 1 बाई यू, इसे भी RHS में ले जाया जाए तो 1 बाई यू, एंड सेकेंड टर्म इज ए पॉजिटिव 1 बाई एफ, सो इट इज 1 बाई एफ. सो वी गेट 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज mirror formula for the convex mirror. Now this video is completed. Thank you very much.